Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Maths 2 Chapter 3 Triangles. This is third part of our video. We are going to start with practice set 3.2. Myself Fawzia Sayyed. Students, you have to watch each and every video on full screen mode. So let's start with practice set 3.2. In question number 1, in each of the examples given below, a pair of triangles is shown. Equal parts of the triangles in each pair are marked with the same signs. Observe the figure and state a test by which the triangles in each pair are congruent. So there are two triangles given, namely ABC, triangle ABC and triangle PQR. So equal parts of a triangle in each pair are marked. So suppose AB is marked with a single line and PQ is marked with a single line. So it means that AB is congruent to PQ, same as BC is congruent to QR and AC is congruent to PR. So it means that by SSS test, that is the three sides are common from both the triangles, it means that by SSS test, triangle ABC is congruent to triangle PQR. So now in this case, first side XY is congruent to side LM, then angle XYZ is congruent to angle LMN, then side YZ is congruent to side MN. It means side, angle, side. So it means that by SES test, this triangle XYZ is congruent to triangle LMN. Now question number 2, angle QPR is congruent to angle UST. So angle, then PR is congruent to ST, then side. Angle PRQ is congruent to angle STU, then angle. So it means angle, side, angle test is applied over here. So triangle PQR is congruent to triangle ST. Okay. Now fourth question, triangle LMN and triangle PTR. So in this, LM is congruent to TP, then angle LMN, that is 90 degree, is congruent to angle PTR 90 degree. Then as we can see that this is the 90 degree angle, so the opposite side LN is congruent to PR. So it means PR and LN are the hypotenuse. So by hypotenuse side test, this triangle LMN is congruent to triangle PTR. Okay. Now question number 2. Observe the information shown in the pairs of the triangles given below. State a test by which the two triangles are congruent. Write the remaining congruent parts of the triangles. So हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है एक्चुअली में, दैट कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. So from the information shown in the figure, in triangle ABC, since angle ABC is congruent to angle PQR, right? Information में कोई बताती है because यहाँ पर marking है. Then next, segment BC is congruent to segment QR. After that, again angle ACB is congruent to angle PRQ. So by angle side angle test, this triangle ABC is congruent to triangle PQR, right? सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, तो जो रिमेनिंग जो एंगल्स ये साइड बच गए हैं तो वो भी करस्पॉन्डिंग रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो फॉर एग्जांपल एंगल BAC एंगल, अगर एक बार ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो इसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स सब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम. ओके. सो एंगल BAC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR, corresponding angles of congruent triangles. Then segment AB will be congruent to segment PQ, and also segment AC is congruent to segment PR, corresponding sides of congruent triangles. Okay. Now second question in this, from the information shown in the figure, in triangle PTQ, so here triangle PTQ and here triangle TSR. Okay. Segment PT is congruent to ST. PT is congruent to ST, given information. Then angle PTQ, this PTQ is congruent to angle STR, vertically opposite angle, right? तो ये भी congruent रहेगा. फिर then QT is congruent to TR. Okay, see here, given information. Then from side angle side means PT is a side, then angle, then again QT is a side. It means side angle side test.
दिस टू ट्राइंगल दैट इज PTQ एंड TRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय एस टेस्ट. नाउ जो भी रिमेनिंग साइड्स और जो भी रिमेनिंग एंगल्स रहेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो देयरफॉर साइड PQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड SR and angle QPT is congruent to angle SRT and also angle PQT is congruent to angle TSR. See here, angle TPQ is congruent to angle TSR, angle TQP is congruent to angle TRS. Corresponding angles are of congruent triangles. Same for PQ and SR also, corresponding sides of congruent triangles. Now question number 3. From the information shown in the figure, state the test assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruent parts of the triangles. So same हम लोग को वही करना है इसमें भी कि हम लोग को क्या बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों सिमिलर है. देन अगर ये सिमिलर है तो या फिर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स, सो वी हैव टू प्रूव दैट we have to find the remaining congruent parts of the triangles. So since triangle BAC is congruent to triangle PQR, triangle PQR 90 degree, then side AB is congruent to side PQ and side BC is congruent to side PR. So whatever information is given over here we have to write. So first, in triangle BAC and triangle PQR, segment BA is congruent to segment PQ, segment BC is congruent to PR, and angle BAC and angle PQR is 90 degree, right? This is given information. So जब 90 degree आ गया तो ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस. सो बाय द यूज ऑफ हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ट्राइंगल BAC is congruent to triangle PQR. So what is the rest of the remaining sides? Side AC will be congruent to side QR because corresponding sides of congruent triangles. Also angle ABC will be congruent to angle QPR. Also ACB is congruent to angle PRQ, congruent angle of congruent triangles. Now question number 4. As shown in the adjoining figure in triangle LMN. So here is a triangle LMN and triangle PMN. LM is equals to PN. Given क्या है? LM क्या है? PN से equal है, LN PM से equal है. So what we have to prove? Write a test which assures the congruence of the two triangles. Write the remaining congruent parts. Same question. So in triangle LM and triangle PNM, LM is congruent to PN given, LN is congruent to PM. This is also given. Okay. So side MN is a common side. It means MN will be equal to MN, common side. So triangle LMN is congruent to triangle PNM by SSS test because इसकी तीनों sides क्या है? सेम है, congruent है. So by SSS test these two triangles are congruent. So what is the remaining sides? Angle LMN is congruent to angle PNM, angle MLN is congruent to angle NPM, right? So congruent angle of congruent triangles. Now question number 5. In the adjoining figure, segment AB is congruent to segment CB. AB congruent है CB से और AD congruent है CD से. Now we have to prove that triangle ABD, ये दोनों triangle congruent है. Very easy, इसी common sides है, right? तो उसका यूज़ करके by SSS test हम लोग इसको prove कर सकते हैं. So in triangle ABD, AB is congruent to BC and AD is congruent to DC. This is a given information. Segment BD is equals to segment BD because it is a common sides of both the triangles. So therefore, by the test SSS test, side test, we have triangle ABD is congruent to triangle BC. Now question number 6. In the adjoining figure, ZP is congruent to ZR. Where is ZP? So students, here question number 6 is given wrong. So you have to note down from the textbook properly that in figure 3.25 angle P is congruent to angle R. So you have to question आप लोगों को ना लिख कर देते हो. पेज नंबर 33, 6th क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नोट डाउन करना टेक्स्ट बुक से. क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट एंगल P, ये जो एंगल है हम लोग का एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल R से. सेगमेंट PQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू RQ. ये क्वेश्चन नहीं है. ओके, सेगमेंट PQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू RQ. सो वेयर इज़ PQ किससे कॉन्ग्रुएंट है? RQ से कॉन्ग्रुएंट है. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल PQT इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQR. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
इन ट्राइंगल पी क्यू टी, ये जो ट्राइंगल है पी क्यू टी और ट्राइंगल है आर क्यू एस, तो आर क्यू एस, सो इसमें एंगल पी और एंगल आर इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, एंड सेगमेंट पी क्यू एंड आर क्यू वो भी कॉन्ग्रुएंट है, गिवन इन्फॉर्मेशन, वी हैव साइड वी हैव एंगल, ओके वी हैव साइड वी हैव एंगल। सो नेक्स्ट एंगल क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, है ना, ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल क्यू है, ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल क्यू है, इट मीन्स ये दोनों सेम एंगल के हैं, सो ये भी कॉमन एंगल हो गया, सो एंगल साइड एंगल, राइट, दिस इज एंगल P, then side is congruent, then again angle is congruent. So ASA test, so by ASA test triangle PQT is congruent to triangle SRQS. Okay, that's it for today. Thank you for attending the lecture. Complete your notes properly.